Hello, Noma. My voice is audible. Yes, sir. My voice is audible. Yes, sir. Okay. So we have completed the limits and derivative. So any doubt in that? Yes, sir. Okay. Which question? Miscellaneous question number 12. Okay. Just give me a minute. Yes, Noma. Miscellaneous question number? Question number 12. Question number 12. Okay. A plus B to the power n. Okay. Is which try किए थे questions? Yes, sir. Any doubt? सर मिसलेनियस का सारे नहीं होते, 10 तक ही हुए थे. क्यों? क्यों push? सर आगे मैं कर नहीं पाया. डाउट है इस पर ये टाइम नहीं मिला. सर टाइम नहीं था. ओके. एग्जाम कब है? सर अभी डेट नहीं थी एग्जाम्स की. कुछ फिर तो टाइम मिलना चाहिए ना. कंप्लीट वीक था. इस वीक कंप्लीट कीजिएगा प्लीज. We have this question. Okay, we need to differentiate this with respect to x. Ax plus b to the power n. This is equal to ax plus b to the power n. Okay, Noma, किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे? Sir, n. No, ax plus b. If we will check the formula x to the power n, हम इसको कहते हैं with respect to x. हमें पहले power solve करना है. So these two should be same. So पहले ये solve होने चाहिए. So these two should be same. After that, we will differentiate this. Ax plus b with respect to x. Now the derivative of this is nx n minus 1. Okay. So Noma, in this case, x remain as it is, and the power we can write nx n minus 1. So Noma, can you tell me this one? ये क्या हो सकता है? N into ax plus b to the power n minus 1. Very good. And this one? A Differentiate plus 0. A. A. Very good. So this is answer. Okay, sir. And to Okay. question number 13 भी होगा था. Question number 13th. Okay. In question number 13th, you have two functions, ax plus b to the power n, then cx plus d to the power n. इसको कैसे differentiate करें? We will apply the product rule. Two सर functions 12th are. वाले में हमें सर 12th वाले में हमें ax plus b के रेस्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया? Especially if we will check this one, अगर x to the power n को हम differentiate करते हैं, तो this x and this x, this should be same. हमने chain rule किया था ना last class में. Yes, sir. है ना? तो ये दोनों सेम होने चाहिए. Then only we can differentiate it. So यहाँ हमें पहले power को करना है. ठीक है? So power के करने के लिए these two should be same. Now, Okay. Noma, यहाँ here we have two functions which are in multiplication. So what you can do? क्या होता है product rule? Product rule. Product rule. This remain as it is. Differentiate this. इसमें बस chain rule apply होगा जैसे यहाँ किया. Then this remain as it is. Differentiate this. Okay, sir. ठीक है. After this. So question number 17. Question number 17. Very good, Noma. After questions, try किया. Good. 17th. 17th में क्या problem आ रही है? सर मैंने आधा ही किया है सर, उसके आगे हो ही नहीं पा रहा था. अच्छा, चेक करते हैं. Sin x minus
सॉरी यार, थोड़ा सा कुछ इशू है। माइनस कॉस, ओके, फिर डेरिवेटिव। अब यहाँ कौन सा रूल यूज होगा? क्वेश्चन रूल। सो क्या होता है क्वेश्चन रूल? f(x) by gx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सर सबसे पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में आंसर न्यूमरेटर वो कर देंगे डिफरेंशिएट। so in this case the denominator as it is रहेगा sin x minus gx, sorry, sin x minus cos x, and we will differentiate the numerator. So कितना हो जाएगा numerator का derivative? cos x minus sin x। cos x minus sin x. Then minus numerator as it is. Differentiate the denominator. क्या होगा denominator का derivative? cos x plus sin x। cos x plus sin x. Then denominator का सर square. मैंने माइनस कॉमन लिया था बट उससे कुछ हुआ नहीं। Okay, okay, okay. Okay, then denominator का square, sin x minus cos x whole square. ठीक है, फिर न्यूमरेटर ओपन कर देते हैं। sin x minus cos x and cos x minus sin x. Open the bracket, sin x into cos x minus sin square x minus cos square x plus sin x into cos x. Open this bracket. ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कर देते हैं ना, a square plus b square plus 2ab. Okay, then denominator is sin x minus cos x whole square. Next, अभी कितना हो जाएगा? माइनस अगर यहाँ कॉमन लेते हैं, दिस बिकम्स sin square plus cos square, which will give us 1. तो ये -1 हो गया. sin x plus sin x 2 sin x हो गया. So 2 sin x cos x -1. Then ये भी 1 हो जाएगा. Open the bracket. ये -1 हो गया. Then ये -2 sin x cos x हो गया. Okay, by denominator में this one, sin x minus cos x whole square. So this part will cancel. This will give you -2. So -2 by sin x minus cos x whole square. Okay, Noma? यस सर। Okay, अब बस हाँ denominator को आप open कर सकते हैं. This answer. सर क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19, sin x. ये simple question है. Question number 19 is sin x और इसको कहते हैं to the power. Okay. Now, Noma, can you tell me हम किसके respect में differentiate करेंगे? सर ये n जो है सर साइन के बाद है, मतलब साइन से पहले। Sin to the power nx is equal to sin x to the power n. Okay. यस सर। Okay. Can you tell me किसके respect में हम इसको differentiate करेंगे? साइन x। Sin x के respect में. Very good. Then sin x को किसके respect में करेंगे? x। X. Now what is the derivative of this? n into sin x to the power n minus 1। Very good, Noma. Very good. N minus 1. And what's the derivative of this? cos x। Cos x. Very good. Okay. Any other doubt, Noma? यस सर क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21.
21 is sin x plus a by cos x. सर मैंने आधा कर लिया था बट इसके आगे नहीं हुआ. ओके, चेक करते हैं. We will again apply the question rule. तो क्या होगा cos x as it is, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इसका डेरिवेटिव कितना होगा? cos into x plus a. Cos x plus a, okay, not into cos x plus a. X plus a is an angle with cos. Then minus sin x plus a as it is. Then what is the derivative of cos? minus sin x. तो इसको प्लस करके यहाँ लिखें sin x. Okay, Noma? Yes sir. By cos x whole square. Okay, now सर open आपने the- प्लस क्यों कर दिया सर? Noma, यहाँ minus sin x again. तो finally यहाँ multiply हो जाएगा. Okay sir. Okay, now we will open the bracket. So this is cos x. Now this is what cos x plus a मतलब cos a cos b minus sin a sin b. Plus sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. सर आपने क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है? हाँ जी, नोमा यहाँ फॉर्मूला यूज किया. यहाँ हमने यूज किया cos a plus b और यहाँ यूज किया sin a plus b. ओके Okay. सर. Now open the bracket. So this will give you cos square x cos a minus cos x sin x sin a plus sin square x cos a plus cos x into sin x into sin a by cos x whole square. Okay, then Noma, from this and this we can take cos a common. यस सर. कितना हो जाएगा? sin square plus cos square which will give us 1. तो ये cos a हो गया. Okay, Noma? सर कैसे? From this one cos a अगर हमने कॉमन लिया from this and this तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा? सर sin square x. Plus cos square x. यस सर. And what is sin square plus cos square? 1. 1. Okay. यस सर. Now sin a sin x cos x cos x sin x sin a. This will cancel out. यस सर. So in the denominator we have cos x whole square. Okay, so we can write this cos a into sec square x. Both are correct. This is also okay. This is also correct. ठीक है नोमा? यस सर. Any other doubt? सर आप एक बार cos x plus a का फॉर्मूला बता दीजिए. Okay. Cos a plus b. This is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Sin a sin b. Okay. Then we have this sin a plus b, which is sin a cos b plus cos a sin b. Cos a sin b. Okay, Noma? यस सर. Okay. Any other doubt? यस सर. सर क्वेश्चन नंबर 25. सर ये भी मैंने आधा कर लिया था. Okay, Noma, 25th में दो method है. Either you can apply the product rule. No, product rule ही better है. Otherwise, सर मैंने प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई किया है. अच्छा, ठीक है, देखते हैं. Next question 25th. First function as it is. We will differentiate the second one. Second का derivative 1 minus sec square हो जाएगा. Noma, this is correct. यस सर.
then x minus tan x as it is. Then differentiate the 1x plus cos x. X plus cos 1 x. minus sin x. 1 minus sin x, very good. By denominator. Sorry. Then open the bracket. X minus x square. या फिर better है इसको हम लिख देते हैं. This is x plus cos x. Okay, and 1 minus sin square x. This can be written as what? Tan square x. Okay, Noma? Yes, sir. Okay, then first open the bracket. X minus x sin x minus tan x plus tan x into sin x. Then x into tan square x cos x into tan square x. Okay, then sin backward. Then nothing can be solved. इसको ऐसे ही कर देते हैं plus x minus x sin x minus tan x plus tan x into sin So x. plus minus tan x वो नहीं हो जाएगा cancel. Plus minus tan x कहाँ है नुमा? Where is tan x? सर नहीं होगा सर क्योंकि sin x भी है सर. तो further ये solve नहीं होगा फिर इतना ही हम छोड़ देंगे. Okay. Okay, sir. Okay. Any other doubt? Yes, sir. So question number 30. 30. So 30 में which rule we need to apply? Quotient rule. Quotient rule. So क्या होगा? Denominator as it is. Okay. Denominator as it is. Differentiate the numerator into 1. Minus numerator as it is. Differentiate the denominator. Denominator में chain rule apply होगा. हमने अभी किया है ये कुछ. This one. है ना? यहाँ Yes, chain sir. rule. इसी को लिख देते हैं फिर. So इसको अगर आप differentiate करेंगे, then this will give you n into sin n minus 1 into x into cos x. Sin x, okay, to the power 2n. Now this is equal to, open the bracket, sin nx minus nx sin n minus 1 into x into cos x, okay, by sin x to the power n. Okay, Noma? Yes, sir. Okay. Any other doubt? No, sir. Okay, very good. Okay, then फिर हमने ट्रिगो से स्टार्ट किया था. क्वेश्चंस ट्राई सर मैंने असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस किए थे बट सर उसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस कर पाई थी. व्हिच चैप्टर? सर यही डेरिवेटिव्स. ओके, उसमें डाउट्स हैं? सर मेरे से बस कुछ ही क्वेश्चंस हुए थे सर. अच्छा, ठीक है मामा, नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम डिस्कस करते हैं. बस कंप्लीट दीस क्वेश्चंस. ठीक है? यस सर. Okay, then in last we started trigonometric functions. So उसमें हमने angle and reading किया था. Questions हुए थे उसकी? Noma and Sparsh? Noma and Sparsh? Questions हो गए थे? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Question 1 दिया था. Okay, Noma भी try नहीं की? नो सर. Okay, not issue. ठीक है, वो आप ट्राई कर लिएगा. हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अ थ्योरम. Okay, so the theorem is, suppose we have this circle.
We have this circle and this have the radius r, and normal suppose we have this arc, this is AB, and this arc subtend an angle at the center, let the center be O. Now the length of this arc is r. So Noma, can you tell me in radian what is the angle? Theta. No, Sparsh, what is the angle? Sir, 1 radian. 1 radian. Okay Noma, Yes, हमने sir. किया था, 1 radian क्या होता है? It is an angle subtended by an arc having the length equal to the radius of the circle. So here the radiuses are here, the length of the arc is r, that's why the angle is 1 radian. Now suppose if we will increase this arc, suppose we have increased this arc up to here, this C, the length of this arc, like the length of this arc, this complete arc, this be L. Then what happened? This angle will increase. Let this angle be theta, and this theta is in radian. Okay, we are taking the angle in radian. So this angle is directly proportional to the length of the arc. More the arc, more will be the angle. So we can say that angle AOB by angle AO angle AOC by angle AOB. Okay, angle AOC. Sorry, this is not AOC. This is BOC. This is BOC. So this angle BOC, this depends on the arc L. Angle BOC, this depends on the length of arc L. And this angle AOB, this depends on this one. So angle BOC by angle AOC, we can say this is L by R. Angle BOC depends on the length of arc L. Angle AOB depends on this arc AB. So we can say BOC by AOB is equal to L by R. Now, Noma, what is angle AOB? 1 radian. 1 radian. So we can write here 1 radian. Okay. So this is equal to L by R. Finally, we can say that theta is equal to L by R. So the theorem is the angle subtended by an arc of length L at the center of a circle of radius r is given by theta is equal to L by R, where theta is in radian, Okay. So what is the theorem? The angle subtended by an arc of length L at the center of a circle of radius r is given by theta is equal to L by R, where theta is in radian. Okay, Noma, this clear? And Sparsh? Yes, sir. Okay, so length of arc given है, आपको radius given है, you can find the theta, but always remember from this formula, you will get theta always in radian. Otherwise, if suppose theta is given, R is given, you need to find L, then always convert the theta into radian. आप degree में theta use नहीं कर सकते. Okay, so please note down this, then we will start some questions.
Done. This is done. Yes, sir, done. Okay. So please try this question. Find in degrees. Find in degrees the angle subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. Okay, you need to find the angle in degree. Diameter is given and length of arc is given. Please try this question and share your answer. सर आंसर पाई के टर्म्स में बताना है. Answer you need in degree. Okay, so if you are getting the angle in radian, then please convert that into degree. Conversion हम कर चुके हैं last class. Done. Okay, Numa, what's the answer? 130.16 degree. No. At push this time. सर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बस. Okay. सर 25 एंड 1/5 आ गया तो 1/5 को मिनट्स में कर रहा हूँ. Okay. This push आपका आंसर ठीक है. So theta is equal to L by R. Now, Numa, what is L? 11. And what Yes, is R? sir. 25. 25. This is in radian. Okay, you need to convert this into degree. Okay, so multiply करेंगे 180 by pi. 180 by 5. Then 11 by 25 into 180 by pi means 22 by 7. So this is 11, this is 2. कितना हो जाएगा 90. 5. ये कितना हो जाएगा 18. नो में ऐसे कुछ आ रहा था. सर मैंने गलती से 25 by 11 कर दिया. Okay. No, please इसको करेक्ट कीजिए. Do the calculation. Tell me the answer in degree. सर डन. Okay,
Push, what's the answer? 25 degree, 12 minutes. Very good. Noma, please let me know once you complete it. तो मेरा 25.2 आ रहा है 25/2 नहीं आएगा Noma. तो 25.2 25.2, very good. So Noma, हमने कहा था ना कि decimals में हम नहीं लिखते हैं. If we are getting a fraction, then we will convert that into mixed fraction और वहां से minutes में convert होते हैं. यस सर चेक कीजिए हमने कैसे किया था लास्ट क्लास में. And tell me the answer in degree and minutes. Noma, done. सर मैं भूल गई सर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं Okay, okay. तो Noma, आप पहले मुझे बताइए फ्रैक्शन में कितना रहा है आपका आंसर. सर मेरा 25.2 आ रहा है ओके ये आपका 126/5 होगा. ठीक. So after this, convert this into mixed fraction. 126, 5, 2, 10, 26, 5, 25, and remainder is 1. Okay. What you need to do, write 5 here, write 1 here, and write 25 here. ठीक है Noma? यस सर After this, ठीक है, this complete is integral. After this, ये जो integral part is, separate this. So this will give you 25 degree. And this fractional part 1/5, convert this into minutes, so multiply with 60. This you will get 25 degree, and 60/5, this will give you 12 minutes. Okay, Noma? यस सर Okay, please note down this and confirm me. फिर next question check करते हैं. डन Okay, Noma and Spush, please try this question and share your answer. Sir, done. Okay, Spush, what's the answer? 5 pi by 12. 5 pi by 12 centimeter. Very good, Spush. That's correct.
सो मेरा आंसर 1.30 आ रहा है। रोमा पाई में ही आप आंसर बता सकते हैं। आर यू गेटिंग 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर? सो मैंने पाई की जगह 22/7 लिख दिया था। ओके ओके ओके, अभी मैं चेक करता हूँ जस्ट गिव मी। नोमा आपका जो आंसर था, वी नीड टू फाइंड दैट लेंथ एल, सो दिस इज 15 डिग्री। नोमा इसको आपने चेंज किया इन रेडियन? यस सर। कितना है? 5/12? यस सर। Okay, so theta is equal to L by R. Theta you have pi by 12. Okay, radius is 5. You need to find L. So L क्या होगा आपका? 5 pi by 12. Okay, and आपने यहाँ पे 22/7 put कर दिया. So 22/7 means 11 by this 6 हो गया. So 55 by 6 into 7. 55 by 42. तो नोमा आंसर क्या आ रहा है आपका? सो 1.30। हाँ 1.3 आएगा. ठीक है नोमा, that is correct. Okay, please try this and help with us. If anyone have a doubt in this question, then please let me know.
सर मेरा आंसर 35.2 पाई आ रहा है। 5.2 पाई नहीं आना चाहिए नुमा। ओके, चेक करते हैं क्या क्या डेटा है हमारे पास। हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट, so the horse move along keeping the rope tight and describe 88 meters. So what is this 88 meter? रेडियस। No. Suppose ये post है and this is a rope and this is your horse. Okay, this is horse. You move कर रहे हैं in this way like this. And this rope is tight. How can I describe 88 meter? वो यहाँ 88 meter का वर्क कर रहा है, तो 88 ठीक है। एंड फिर यहाँ जो एंगल सबटेंड हो गया वो 72 डिग्री हो गया। So Noma, what is this 88 meter? This is L or R? लेंथ। This is L. Very good. This is theta, so you need to find R. But you need to convert this theta into radian. ओके सर। Okay. Please complete this. सर 35 सेंटीमीटर। Slightly calculation mistake हुई है इस पर। काफी क्लोज है आपका, कुछ छोटी सा मिस्टेक कर रहा है। सर पाई के टर्म्स में बताना आंसर। नहीं, पुट द वैल्यू पाई, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 88 है। सर थीटा तो 6 पाई बाय 15 ही है ना? थीटा आपका 6 पाई बाय 15 कितना है थीटा? कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 है ना, सो 72 into pi by 180. Okay, so Done. 12, 6, okay. 6 pi by 15, you need 2 pi by 3. ठीक है स्पर्श, this is theta. नोमा कितना रहा है आंसर? 70 मीटर। 70 मीटर, वेरी गुड। ठीक है स्पर्श, आपका 35 आ रहा है तो कहीं 2 एक्स्ट्रा हो गया, सो प्लीज चेक करें। हो गया कंप्लीट? सर 1 मिनट। It's 2 pi by 5. Okay. सर यस सर, आ गया 70। Okay. Very good. Then we will start the next topic. Okay. I hope in this topic आपको कोई doubt नहीं होगा. We will start with sign of trigonometric ratios. Trigonometric ratios in different quadrants. Okay, in different quadrants. For example, if we have these 4 quadrants, this is first, this is second, this is third, and this one is fourth. Now,
let this be a point. This is x comma y. This is y. So x comma y means this is x and this is y. So this is hypotenuse. It will be, so that will be given by r is equal to under root x square plus y square. So hypotenuse को हमने represent किया with r, which is equal to under root x square plus y square. First quadrant की बात करते हैं. First quadrant. Okay. So Noma, first thing, sin theta क्या होता है? Let this be theta. Okay. P by h, b by h क्या होता है Noma? या p by b? Noma. So, based upon hypotenuse. No. Sin theta is Perpendicular upon hypotenuse. perpendicular by hypotenuse. Now in this case, Noma, okay, in first quadrant, can you tell me x क्या होता है? X is positive or negative? So, positive. Positive. Why? क्योंकि सारे positive होते हैं. Y be positive. होता है, very good. P by h. So in this case, what is perpendicular? Sir, why? Y. What is hypotenuse? R. R. Now in this case, y is what, positive or negative? Positive. R is what, positive or negative? Positive. Positive. Now positive by positive is what? Positive or negative? Positive. Positive. Its mean in first quadrant, sign is positive. Okay, we will check next one. Noma, what is cos theta? Base upon hypotenuse. By b by h. What is base? X. X. R. R. X is Positive. what? Positive. R is what? Positive. Final answer? Positive. Third is tan theta. What is tan theta? Perpendicular by base. Perpendicular by base. What is P? Y. What is Y base? by X. This is Positive. positive. So this means tan is also positive. Positive. Okay. Now fourth is cosec. So cosec हम directly कर लेते हैं. Cosec is equal to 1 by Sine. sine. So sine is positive. Okay. Sine is positive. So cosec is also positive. Fifth is, what is sec? 1 by cos. 1 by cos. So this is positive. This is also positive. Sixth, cot theta. What is cot theta? 1 by tan. Theta. 1 by tan theta. So tan is positive. This is also positive. Okay, Noma? Yes, sir. So this means in first quadrant, all these trigonometric ratios are positive. Okay, please note down this, confirm me, then we will check the second quadrant. Hands push. Okay, complete. 1 minute, sir. Okay. Done. Push. सर मैं बस लास्ट का लिखूंगा.
So done. Now we will check the second quadrant. Now, in the second quadrant, Mama, can you tell me second quadrant x is what, positive or negative? सर नेगेटिव Why? सर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होता है Okay, now what is y? Y is positive or negative? सर वाई भी पॉजिटिव है सर Y positive. Okay, now sin theta is p by h. Y negative. R क्या होगा, positive or negative? पॉजिटिव R will always be positive. क्योंकि under root of x squared plus y squared. Now sin theta क्या हो जाएगा? नेगेटिव Negative. What is negative? Now cos theta x positive, R positive. Cos theta क्या होगा? पॉजिटिव Positive. Tan theta is this negative positive. So tan theta is नेगेटिव negative. Cosec is 1 by sine. Sine is negative. Cosec भी negative हो जाएगा. Sec is 1 by cos. Cos positive. Positive. Cot is 1 by tan. Tan negative. Cot be negative. Okay, Noma, this clear? यस सर So in second quadrant, cos is positive and it's a reciprocal and all the ratios are negative. Okay, so please note down this. Then we will take the third quadrant. So done. This is done. 1 minute Okay. डन सर आपने बताया था कि जो है सर साइन के लिए जो है ऑल स्कूल टू कॉलेज तो फिर सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए Yeah, opposite कर दिया. Okay. So this y is positive. Okay, ये हमने negative लिख दिया था. This y is positive, so this is positive. This is negative, so this is negative. Okay, here y is positive and x is negative. This is negative. This is positive. This is positive, negative, and negative. ठीक है नोमा? यस सर Okay. Sorry, ये बिल्कुल थोड़ा सा interchange हो गया था. Okay, sign is positive in the second quadrant. Please do the correction. Is push. Please do the correction. Then we will check the third one. So done. Okay. डन Okay. Now we will check the third quadrant.
third quadrant. So in third quadrant, Noma, can you tell me what is x? Positive or negative? Negative. Y? Y? Y negative. Y also negative. Now sine theta is y by r, so negative, positive. R will always be positive, so this will give you negative. Cos is negative, and this is positive. This will give you negative. Tan is negative, negative. This will give you positive. Cosec is 1 by sine. Sine is negative, so this is negative. Sec is 1 by cos. Cos negative, negative. Cot is 1 by tan, so this is positive. Okay, Noma? And is pushed. Yes, So yes. in third quadrant, tan is positive, so its reciprocal will also be positive. Please note down this and confirm me, then we will start the next one. Sir, done. Your push, Noma, is done. 1 minute. Okay. Done. Now we will check the fourth quadrant. Next is fourth quadrant. In the fourth quadrant, x is what? Positive, y is what? Negative. Now sine theta is y by r, so minus plus, this will give you negative. Cos is plus, plus, this will give you positive. This will give you negative, positive, so negative. Cosec is 1 by sine, negative. Sec is 1 by cos, positive. Cot is 1 by tan, negative. Okay, Noma? And push, this clear? Yes, sir. Okay, so please note on this, confirm me, then we will start the next one. Sir, done. Okay, push. Noma, please confirm. 1 minute. Okay. Done. Okay, very good. Now we will summarize the result. Okay, so can you remember these formulas? Sorry, these results. Always remember this word: all, school, to college. Okay, so that means in the first quadrant, A means all are positive. S means sign is positive. If sign is positive, then it's reciprocal. That means cosec. This is also positive. T means tan. This is positive, and it's reciprocal. That means cot. This is positive. C means cos, and its reciprocal. That is sec. These are positive.
So in the second quadrant, sine and cosec are positive, remaining are negative. In the third quadrant, tan and cot are positive, remaining are negative. In the fourth quadrant, cos and sec are positive, remaining are negative. Okay, no minus push, this clear? Yes, sir. This push, this clear? Yes, sir. Okay, next we will do the next topic. Next is, okay, just remember one point. Suppose we have an angle, this. Okay, this is your reference line. You are measuring the angle in this direction. ये कौन सी direction होती है? Clockwise या anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. This is anti-clockwise. So we will take the angle as positive. Okay, if you measure the same angle in clockwise direction, for example, you have this angle. You have this angle and you measure this in this direction. This is clockwise direction. So we will take this angle as minus theta. So for example, if we have this 60 degree, then what is this angle? This will be minus 60. So this is the standard notation that the angle measured in clockwise direction will be taken as negative and anti-clockwise will be taken as positive. So we will write these two notes: angle measured in clockwise direction, angle measured in clockwise direction will be taken as in clockwise direction will be taken as positive. Okay, next is angle measured in anti-clockwise. Okay. In anti-clockwise, and angle measured in clockwise direction. In clockwise direction will be taken as negative. Okay, anti-clockwise positive, clockwise negative. Is position Noma, this is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start the next topic. Next is trigonometric ratios. Trigonometric ratios of angle minus theta in terms of theta. Okay, trigonometric ratios of angle minus theta in terms of theta. Now suppose we have this point, this coordinate is x comma y, as this is in the fourth quadrant, so this coordinate will be x comma minus y. This is clear. Now we will draw a perpendicular, this, and from this also we will draw this perpendicular. Okay, now let this point, this be B, this is O, and this is C. Now in triangle AOB, what is sine theta? This is y, this is y, this is x, and this we will take as minus y. Now what is sine theta? Perpendicular by r. R is under root of x squared plus y squared. Okay, so sine theta is y by r. Y is positive in this coordinate. R is positive. So sine theta is positive. Now, if we will take sine minus theta, then sine minus theta means in fourth quadrant, what is perpendicular? Minus y by r. Sparsh Noma, ye clear hai? Yes, sir. Sparsh? Yes, sir. Okay, so this is triangle OBC. Okay, now sine minus theta is minus y by r, sine theta is y by r. So can we say that sine minus theta is equal to, in place of y by r, we can put this value, sine theta. Sparsh and Noma, this clear? Yes, sir. Yes, sir. Sparsh.
Now, what is cos theta? X by r, base by hypotenuse. What is cos minus theta? Again, same, x by r. So we can say, in place of this x by r, put this value. So we can say cos minus theta is equal to cos theta. Now, third one, tan theta. Now, tan is what? Perpendicular, y by x. We will take tan minus theta. So this will give us minus y by x. So in place of this minus y by x, we will put tan theta. No man is pushed. This clear? Yes, sir. Yes, sir. Now similarly, if sine minus theta is minus sine theta, then for this cosec minus theta will also be equal to minus cosec theta in the same way. ठीक है, cosec को आप लिख सकते हैं 1 by sine, ये वहां से आ जाएगा रिजल्ट. Fifth sec theta, sec minus theta है ना, अगर cos minus theta पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा. Sixth is tan नेगेटिव है, then cot भी नेगेटिव ही होगा. So from this we will get cot minus theta is equal to minus cot theta. Noma and Sparsh. This clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, इसको please note कीजिए. Then we will start the next one. Sir, done. Okay. Noma, please confirm. 1 minute. Okay. Noma and सर फिफ्थ में माइनस सेक थीटा नहीं होगा? नहीं, sec में पॉजिटिव होगा ना, because cos theta is what positive. यस सर. So sec भी पॉजिटिव होगा ना. Sec minus theta का मतलब 1 by cos minus theta, that is cos theta. यस सर. सर ये क्या सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, for any quadrant this is applicable. So we need to learn these formulas. Okay, that only cos is positive, cos and sec is positive, and all the ratios are negative. ओके सर, डन. Yeah, इस पर हो गया था ये? Yes, sir. मैंने पहले वो बोल दिया था. अच्छा, sorry. Now we will do the next type. Next is trigonometric ratios. Trigonometric ratios of angle greater than 90. Of angle greater than 90. Okay, up to 90 तो आपको value पता है. You know the value of sin 60. You know the value of cos 30. Greater than 90. But अगर आपसे पूछते हैं कि what is the value of sin 120, वहाँ issue है. Standard angles के angle आपको 90 तक लाना है. So उसके लिए फिर formula होता है. Whenever you have an angle greater than 90, then we will use these formulas. इसमें हम क्या करते हैं? हम 2 categories में divide करते हैं. First is n is even. Okay. So in this case, formula कैसे होता है? Or we will take the standard form. Just give me a minute. हम ये लेते हैं t. Okay. T is 90 into n plus minus theta. Okay. What is t? T means trigonometric ratios. That can be sine, cos, कुछ भी हो सकता है. ठीक है? Sine, cos, tan, cot. T stands for
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमें हमारे पास अगर ये फॉर्म है 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। केस 1 हम लेते हैं व्हेन n इज इवन। n अगर इवन है तो क्या होता है, साइन रिमेन साइन, कोई चेंज नहीं होता, cos remain cos, tan remain tan, all the ratios will remain same, all the ratios remain same. ठीक है, क्वेश्चन होगा। Yes, sir. Okay, so if n is even, then there is no change in the trigonometric ratios. Sin क्या होगा, that depends on the quadrant, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। केस 2 में क्या होता है, n अगर ऑड होता है, so in that case क्या होगा, sin will change into cos, और cos है then cos will change into sin. Tan है, tan will change into cot, and cot will change into tan. Sec है, sec will change into cosec, and cosec will change into sec. Okay, first of all note this table, फिर क्वेश्चन लेते हैं, वहां से हम समझेंगे कि कैसे चेंजेस होंगे। Okay, जल्दी से इसको नोट कीजिए, then we'll check the questions. Done. Push, हो गया complete? Sir, 1 minute. मिनट में निकलना है, तैयार है। बात भी करिए 10 मिनट बाद। ठीक है, push, done. Push, Yes, sir, done. we will take example. ठीक है, तो कैसे करना है, suppose we have this question sin 120. Okay, so always write the angle in terms of 90. ठीक है, उसके लिए best method is always divide that with 90. So 91, 90, remainder is 30. Okay, so always write this sin 90 into this number. So 90 into 1 plus 30. Noma, this is clear? सर फिर से बता दीजिए। Whenever you have an angle, please divide that angle with 90. Always divide with 90. अभी ये simple है तो आपको लग रहा है कि what is the need of dividing this? ये तो third fourth class का method है, ऐसे नहीं करना है। अभी आगे questions 1000 में होंगे। Always divide the angle with 90. फिर 120 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 into 1 plus 30. Yes, sir. है ना, तो 90 से divide करें, then multiply these two. Okay, now this number, check this number. Noma, this is what, even or odd? Odd. Odd. Check the case. In case of odd, क्या होता है? Sign will change into Cos. cos. So this sign will change into cos and cos 30. Okay. जो भी यहाँ पे theta है, we will write that. अब sin आता है, तो sin will decided by this original ratio. अब check करना है नोमा 120 किस quadrant में lie करता है. Okay. So कैसे सर करना है? यहाँ पे cos 30 क्यों लिखा सर? cos 120 नहीं हो सकता? एक मिनट. Okay. आप कह रहे हैं नोमा check this. T 90 into n plus minus theta. तो यहाँ जो भी थीटा होता है ना नोमा, वो आता है. तो यहाँ जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ थीटा आएगा.
ओके सर। ओके, सो पहले क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है, देन जो भी थीटा होगा उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। नाउ चेक द साइन 120 एंड किस सर यहाँ पे आपने +30 क्यों किया सर? माइनस भी तो हो सकता है। अच्छा, वो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल साइन 90 into 1 minus 30 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। यस सर, यस सर। ठीक है, वो तो हमेशा ऐसा करना, 90 से डिवाइड किया, 90 into this number plus 30। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि प्लस क्यों कर रहे हैं। अच्छा नोमा 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर सेकंड। सेकंड में। कैसे कर रहे हैं, 90 ये है, 180 ये, सो 120 सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट ओरिजिनल रेशियो विल डिसाइड द साइन। ये साइन को डिसाइड करता है, ये नहीं करता है। सो साइन इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? पॉजिटिव। Positive. So we will put a positive sign here. So cos 30 का मतलब √3/2. Uma, this is clear. यस सर। We will take one more example. For example, cos, and we have 240. Okay. Noma, tell me the steps. सबसे पहले क्या करना है, 240 को डिवाइड करना है with 90. बताइए नोमा कितना आएगा? नोमा यस सर। 90 into 2 180. Remainder is 60. नोमा ठीक है ये? यस सर। सर 90 into 2 plus 90 into 2 plus 60. Okay. Now this is even number. तो even में क्या होता है? सर इवन में साइन सेम रहता है। सेम रहता है। तो ये cos है, cos ही रहेगा, cos 60 degree. Okay. Now this will decide the sign. 240 नंबर किस quadrant में आएगा? थर्ड। Third quadrant. Very good. In third quadrant cos क्या होता है? नेगेटिव। Negative. Put a negative sign. Cos 60 का मतलब 1/2, so -1/2. This is clear, Noma? यस सर। We will take one more example. For example, tan 390. Okay, 390. Divide this with 19. Noma कितना आएगा यहाँ? 4। 4. So 360. Remainder is 30. So we will write this as tan 90 into 4 plus 30. Okay. So Noma, this is even number. So tan will change into सर tan tan ही रहेगा। tan ही होगा, बिल्कुल tan 30। तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप और डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, तो Yes, नेक्स्ट इज 390। नोमा 390 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। फर्स्ट में। वेरी गुड। दिस इज 360। 360 में 30 ऐड हो रहा है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। देन नेक्स्ट यू नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ 1030 व्हिच इज 1/√3। नोमा, ये क्लियर है? यस सर। समझ में आया? अगर एंगल 90 से ग्रेटर है कैसे सॉल्व करना है? यस सर। Okay, very good. Then Noma and Spush, please note down the homework. Okay, कल हमारी क्लास मॉर्निंग में है ना? मॉर्निंग 9 o'clock. यस सर। Okay, okay. So assignments अभी आपको नहीं देंगे. Assignments कल मिलेंगे आपको क्योंकि you don't have so much of time. So please note down the homework from this trigonometric. So homework is exercise 3.1. Then try exercise 3.2. हमने अभी 1 to 5 क्वेश्चंस नहीं किए। अगर हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं होते नॉट इशू। प्लीज ट्राई टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट करनी है। 3.2 में 6 to 10 कर रहे हैं और क्वेश्चंस ट्राई करिए, कर सकते हैं वेल एंड गुड, वरना हम कल करते हैं इसको। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। देन कल फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। Bye, sir. ओके स्पर्श, बाय।